Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu and Indian Express. So I'll be covering the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing that content with some relevant information that can help you prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 19th of April. The first topic is government sanctions oxygen plant amid COVID-19. Second, former PM offer plan to tackle the second wave of COVID-19. So the former Prime Minister, that is Dr. Manmohan Singh, he has given some suggestions to the Prime Minister. Third is US-China agreed to cooperate on climate crisis. Second last, disc-footed bat found in Meghalaya. And the last is the ECI, that is Election Commission of India, cannot be a super government, right? So these are some of the important news and editorial from today's newspaper. Apart from this, there would be some MCQs question, and these questions are based on current affairs. So this is inevitably will be going to helping you in the upcoming prelims examination. So before I proceed, announcement that Apti Plus has launched 10 full-length tests complementing 3 CSAT tests. This would be helping you for the confusion that arises to the student in the CSAT paper. And this you can avail at the nominal price of 1499. So what you have to do, you have to just refer to the description section of this video where I've provided a dedicated link that will help you to register for this course. Now the first, that is government sanctions oxygen plant amid COVID-19. As we know that the coronavirus cases is on surge, and because of which the demand of oxygen is in high. सो पूरे इंडिया में, सिर्फ किसी एक स्टेट में नहीं, पूरे इंडिया में प्रिसाइजली 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ. सो व्हाट हैज़ हैपेंड, लाइक ड्यू टू हाइडिंग डिमांड, जो मेडिकल ग्रेड की जो ऑक्सीजन है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है. So the Union Health Minister has said that government has sanctioned 162 pressure dueling adoptions PA plants, इसको PSA plants भी कहते हैं. We'll tell you what is the difference between adoption and adoptions. So out of 162 PSA plants जो है, जो sanction की गई, उसमें 3 already installed कर दी गई है. So this 33 include, I'm sorry, this is 33. 33 has already been installed. So 5 has been installed in Madhya Pradesh, 4 in Himachal Pradesh, 3 in Chandigarh, Gujarat and Uttarakhand, 2 in Bihar, Karnataka, Telangana, and 1 each in Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Haryana, Kerala, Maharashtra, Puducherry, Punjab, and Uttar Pradesh. So these numbers, this sum ups to total 33 that has already been installed. Government ने कितने allocate किए हैं total PSA? That is 162, right? So PSA is pressure swing adoptions. Now I will tell you a difference कि जो adoptions होती है और absorption में क्या फ़र्क है. So first talking about adoption, this is molecule adheres to surface of the phase. यहाँ पे आप molecule देख सकते हैं, this is stick to the surface. But वहीं पे absorptions की अगर बात करें तो molecule are drawn into the bulk into the phases. So they are loosely attached और ये bulk में होते हैं, right? So this is a major difference between the adoption and absorptions. Now advantages of the pressure swing adoption plant, जो PSA plant होगी उसके क्या क्या advantages होंगे. So the PSA plant manufacture oxygen, help hospital to become self-sufficient in requirement of medical oxygen. तो 2 तरह की ऑक्सीजन रिक्वायर्ड की जाती है इंडिया में. The one it is in the medical group and the other is in industry, right? So the industry people also require oxygen. बहुत जगह पे जहाँ पे माइनिंग होती है वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की. कोल माइनिंग हो गई या बहुत सारी चीज़ वेल्ड करने भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो उस रिडक्शन, उसके जो डिमांड को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो सारी जो डाइवर्जन होगी वो मेडिकल यूजेस में की जाएगी, इंडस्ट्रीज में इसके यूजेस कम किए जाएंगे. Now diversion from the industry to the medical uses, because considering the fact that the COVID-19 was on surge, so the first most priority for the government is to make sure कि जो जितने भी ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट है वो भी मेडिकल यूजेस में हो और इंडस्ट्रीज की यूटिलाइजेशन में कम की जाए. तो जो एडिशनल वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है कुछ स्टेट्स में, द फर्स्ट स्टेट अमंग देम इंक्लूड महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड. जो एडिशनल वेंटिलेटर है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट? गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़.
सो द हेल्थ मिनिस्टर हैज सेड कि जो ऑक्सीजन प्रोडक्शंस है वो डाइवर्ट किए जाएंगे इंडस्ट्री यूजेस से। और जो इंडस्ट्री यूजेस की अगर बात करूँ तो महाराष्ट्र से जो चीज़ें आनी है वो इतनी है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, राइट। Now, Oxygen Express train. This is also there in news, but I have clubbed the news because ये इसके अंदर ही आप इस न्यूज़ को समझ सकते हैं, अलग से इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस गवर्नमेंट ने जो इंडियन रेलवेज है उन्होंने स्टार्ट किया है। Now, this is something which is again important. They would be transporting the liquid medical oxygen that is required, और ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स है पूरे इंडिया में ट्रेन के थ्रू भी सेंड किया जाएगा। Now, amid the surge in the coronavirus cases in the country, the demand for medical oxygen has again been increased. Now, talking about the Madhya Pradesh and Maharashtra, the government has earlier approached Ministry of Railway to explore the liquid medical oxygen tank that could move through the rail network. So it is important कि जो रेल नेटवर्क है जो सारी पोटेंशियल है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी देश की जितनी भी कैपेसिटी है उसको जितना पोटेंशियली यूज़ किया जा सकता है टू ओवरकम दिस पेंडेमिक, टू कंट्रोल दिस पेंडेमिक कैन बी डन। तो उसी की तरफ ये एक डिसीजन है जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने रेलवेज के थ्रू जितने भी लिक्विड ऑक्सीजन्स हैं, जो टैंक्स हैं, उनको ऑक्सीजन एक्सप्रेस के थ्रू ले जाने की बात कही है। Now, the second news, that is former Prime Minister offer plan to tackle the second wave of COVID-19. This is important for the General Studies paper 2, government policies and interventions. So the former Prime Minister has given some suggestion, and at this point of time, it is very commendable that the Prime Minister, who is again the opposition, belonging to an opposition party of Congress, he is not criticizing. This is a time not to criticize, rather than to support the government and to suggest some measures that is definitely benefiting the nation, right? तो ये समय क्रिटिसाइज करने का नहीं है, एक दूसरे पे उंगली उठाने का नहीं है। डेफिनेटली दिस इज अ टाइम टू हेल्प द गवर्नमेंट, बट एक तरफ जो दूसरी पक्ष है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज द गवर्नमेंट इज taking a leap in elections like in Assam and Calcutta. This is something West Bengal. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़राब है। एक तरफ से आप कोविड-19 को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप वेस्ट बंगाल और असम के इलेक्शंस में इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। यू शुड टेक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी आपके कैंपेन्स हैं उनको कम करिए, राइट? So you cannot do two things at the same time. One time you're asking government, you're asking citizen in other cities to make them quarantine. Another state like West Bengal and Assam, you are having a pool of people going through your rallies. This is something that should be controlled. You can share your opinion in the comment section. आप क्या समझते हैं कि इस तरह से चीज़ों को कितनी करेल करनी चाहिए, गवर्नमेंट को और कहाँ ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है? You can suggest your point of view in the comment section. Now let's explore the news. तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इन जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर उनको सजेशंस दिए हैं कि जो सेकेंड वेव है कोविड-19 को, उसको किस तरह से डील की जानी चाहिए। एंड ही सेड दैट गवर्नमेंट मस्ट एंडेवर इन रैम्पिंग अप द वैक्सीनेशन एफर्ट्स। जो पूरी वैक्सीनेशन है, टिल नाउ वी हैव ओनली 13 करोड़ पीपल दैट हैज़ बीन वैक्सीनेटेड। आपको पता है इंडिया की जनसंख्या है 133 करोड़ के आसपास। सो नॉट इवन 10% पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड। आई एम टॉकिंग अबाउट येस्टरडेज वैक्सीनेशन ड्राइव। अभी जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, दिस नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज, बट इट शुड इंक्रीज वेरी हाई कंपेयर टू जिस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है वायरस की, उसके डबल रफ्तार से हमें वैक्सीनेशन भी बढ़ानी होगी। Now the union government must give flexibility to the state government. This is what he said. He said there should be decentralization, right? Decentralization की ज़रूरत है ताकि states भी अपने हिसाब से decide कर पाएं। Now, invoking compulsory licensing is something which is very important. CL would be again very important term here. CL के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियोस देखें, या CL को आप अलग से विकिपीडिया भी कर सकते हैं। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग होती क्या है कि एक जो ड्रग्स है उसको दूसरे जगह दूसरे कंपनी को भी ऑथराइज की जाती है कि आप भी बना सकते हैं, आपको कंपलसरी लाइसेंस दिया जा रहा है। नाउ द सेंटर शुड ऑल्सो publish order regarding the doses of the vaccine that has to be given to the people, and center can also keep 10% of this expected deliveries for emergency need. So decentralization is the formula, and making the vaccination drive, ramping up the vaccination drive is something that is very important at this point of time. Now, boosting vaccination drive, this has been already called, and how it can be done. So he stressed, the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh has stressed that India
had vaccination with very small fraction of population, which I have told you. It is just close to 11% of people which have been vaccinated till date. And the government must scale up the vaccination effort, जहाँ पे right policy की ज़रूरत है to better and very quick. Much better and very quick is something that has to be done. And government of India must proactively support the vaccination process to expand the manufacturing facility. तो जो हमारी manufacturing facility है उसको increase करने की ज़रूरत है, so that we can increase the number of vaccine that is being produced in the country, and at the same time this would help to overcome the problem of vaccinations. Now he also suggested that the vaccine has also been cleared by the credible authorities such as European Medical Agency. जो भी ऐसी दवाएं, ऐसी वैक्सीन जिनको बाहर की एजेंसीज ने अप्रूव किया हुआ है, लाइक यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज ने जिसको अप्रूव कर दिया, जो यूएस की एफडीए है, यूनाइटेड स्टेट फूड्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसको अप्रूव किया है, उन ड्रग्स को भी इंडिया में एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है, उनको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें. So these are some of the core points that he suggested, and I personally feel this is a welcoming gestures coming from the former Prime Minister, and this type of thing is very necessary at the time of pandemic when India is witnessing such high cases. Now, US-China to agree to cooperate in the climate change, climate crisis, and the way they have treated to the climate is something which has to be reversed back. So this is important for your general studies paper 2, effects of policies, पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज. यूएस और चाइना ने दो वर्ल्ड के सबसे बड़े एमिटर्स है कार्बन के. इनके मुताबिक दे हैव सेड दे वुड बी कोऑपरेटिंग टू कर्ब द क्लाइमेट चेंज विद अर्जेंसी. दिस इज व्हाट बोथ कंट्रीज हैव सेड. और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रही है कि जो नई प्रेसिडेंटशिप है यूएस में, खास करके जोए बिडेन की, ही हैज सेड दैट ही इज़ मोर कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस. तो एक स्टेटमेंट आई थी जहाँ पे दोनों कंट्रीज ने कंफर्म किया, और जब ये होस्ट की गई थी यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा वर्चुअल समिट, उसमें ये सारी डिस्कशन हुई है. दोनों कंट्रीज की तरफ से, चाइना और यूएस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुई. यूएस की तरफ से स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट चेंज मिस्टर जॉन केरी, यू कैन सी हिज इमेज, ही इज जॉन केरी, राइट. So John Kerry has said that both countries are looking to cooperate with each other to tackle the climate change. Now more about the agreement, क्या क्या और बातें कही गई है. Agreement was reached by the US special envoy, that is John Kerry, and his Chinese counterpart has said that they would be talking this. They have also talked this in the Shanghai last week. जो Shanghai cooperation हुई थी, SCO की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी इन्होंने बात की है, ऐसा कहना है दोनों का. और जो स्टेटमेंट रिलीज की गई है, they said that they are committed to cooperate with each other and they would be tackling the climate crisis. तो as you know that this is something which is very urgently, एंड जो पेरिस क्लाइमेट चेंज थी, पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है PCA, उसको जो प्रीवियस यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया था. नाउ द न्यू प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोए बिडेन हैज़ अगेन कम टू रिन्यू इट. सो ही सेड दैट ही वुड बी रिन्यूइंग दिस PCA, पेरिस क्लाइमेट चेंज, एंड ही वुड बी एडहरिंग टू ऑल द रूल्स एंड क्लाउजेस दैट आर प्रोवाइडेड, राइट. सो एक बहुत ही अच्छी स्टेप है यूएस की कि वो प्रोएक्टिवली इस तरह के डिसीजन ले रहा है और अपने क्लाइमेट चेंज के प्रति इंक्लिनेशन दिखा रहा है. Now the biggest carbon emitter, as we know that China is the world's biggest carbon emitter, followed by United States. So number one is USA, the number one is China. ये आप याद रखें. This is something very important. And when it comes to second, it is United States, right? The two countries pump nearly half of the fossil fuels and warming up the planet. Now these cooperation is key to success the global efforts. Climate change को कम करने में ये बहुत हद तक मदद करेगी. And nothing that China is the world biggest coal user as well. So this is something, these factual point is again very relevant. Now US की कुछ अपनी कमिटमेंट है. जो नई प्रेसिडेंटशिप है उन्होंने कहा है they have invited 40 leaders across the world including the Chinese president to the meeting that is scheduled to be held from April 22 to April 23rd. And US and other countries are expected to announce more ambitious national target for cutting carbon emissions, right? So along with pledging financial help for climate efforts by using the wealthy nations. So these are the US commitment, and I personally feel जो नई presidentship है जोए बिडेन की, he would be looking forward to overcome the challenges, and his intention shows that he would do something better for the climate change.
Now, disc-footed bat found in the Meghalaya. You can see this image of the disc-footed. I will show you the enlarged image as well. So this is important for your general studies paper 2, conservation organism, the new organism which is being found. It become very relevant for your prelims examination. So from prelims point of view, this is something which is again very important. A new species of bat, which is also a disc-like bat. This is a common name which is being found in India. First time ये मेघालय में पाई गई है, and it is found under the bamboo patch near Nongkim Wildlife Sanctuary. This is there in Meghalaya. और जो scientific name है इस bat की, that is Edosopus denticulus, right? So this is a name. If it is being asked in prelims examination, आप इस नाम को याद रखें because इससे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं. So this is an image. This is how it looked like, and this is an enlarged image. This is there in the newspaper as well. Now, a team of scientists from Geological Survey of India, जो JSI है, ZSI और European Natural Historical Museum के लोग साथ में इन्होंने expert जो थे, they have found that the disc-like pad is found. और जो कलर, जो ऑरेंज कलर की एनिमल पाई गई है, the hill Meghalaya has been reported with 66 species of bat and 130 are found in the entire country, right? तो सबसे ज़्यादा जो species की variety है वो मेघालय region में है. And the disc-footed bat is found to be genetically different from the other kind of bat bearing the disc-like pads, right? You can see the images, they have the disc-like pads. Now the bat is reported to root inside the bamboo interknots aided in the adhesive disc. And so far this species is known to thrive in localities like southern China, Vietnam, Thailand and Myanmar. So these were the reason where before it was found, but in India the most sample or the most population is there in Meghalaya. Now the other news, this is an editorial. The Election Commission of India cannot be a super government. This has been written by P.D.T. Acharya. He is a former Secretary General of Lok Sabha. So he has criticized the functioning of the ECI and how best possibly the ECI can function. He has suggested, and this is something which is very important. After General Studies paper 4, even in General Studies paper 3, they can ask you the questions. So make sure you have ample information so that you can write that in mains paper. So the editor want to say that, the author want to say that the Election Commission of India is an autonomous constitutional authority that is responsible for the administration of union and state elections. Even जो assemblies की elections होती है, state assemblies की, office of president and vice president, ये सारे चीजें Election Commission of India की duty होती है election conduct कराना. So this is a static portion from polity. This is something which is very important for you. Now, constitutional power की अगर बात करें election commission की, I'm just giving you a revision of that, because if you have not read the static portion, read it out. This is something which is very important. Article 324 क्या कहती है? Supersedence, direction, control of election. 325 intangible inclusion to claim the included in the special electoral ground and the ground of religious, sex, caste and religions. Article 326 कहती है कि elections to the houses of the people and legislative assemblies on the basis of adult surface, right? 327 power of parliament to make provisions with respect to the legislative election, legislature जो है उसको लेकर के. वैसे ही 329 है जो कि power of state assemblies को define करती है, और 329 bar intervention of court in the electoral matter. तो किसी भी electoral matter पे कोर्ट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती, कोर्ट को बार्ड किया गया. नाउ इस एडिटोरियल में कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के बात कही गई है कि एमसीसी जिस तरह से इम्पोज की जाती है, ये एक बहुत ही हाई पावर देती है इलेक्शन कमीशन को किसी भी अब्रप्ट डिसीजन के लिए. सो द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय द ईसीआई इज सेड टू बी द गाइडलाइन मेंट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, और जो उसके कैंडिडेचर हैं वो सारे लोगों पे अप्लाई होती है. नाउ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कब से अप्लाई होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कन्फ्यूजन जो सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं. तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स, राइट, जिस दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इलेक्शन कमीशन ने, उस दिन से उस जगह पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो जाती है. दैट बिकम इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ओवर और इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इन टू एक्शन, राइट. सो मेक श्योर, इस तरह से यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछे हुए हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए.
Now, this code is based on the consensus of political parties एंड जो कंडक्ट है पॉलिटिकल पार्टीज की उसमें खास करके जो केरला गवर्नमेंट को लेकर के एक डायरेक्टिव दी गई थी 1960 में, उसके बाद से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फंक्शनिंग कर रही है पूरे इंडिया में फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड्स, एंड इट वाज अडॉप्टेड एज एन रीडिफाइंड इन लार्ज एनफोर्स, एंड उस पूरी बाद में इसको रिवैम्प करके 1999 में इसके दायरे को, इसके पावर को और ज़्यादा बड़ा किया गया. Now, the model code of conduct is observed by the stakeholder of fear of action and ECI. Now, कुछ concerns raise किए गए हैं. दो important concerns है. First is the ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल, जिस तरह से ऑफिसर्स की ट्रांसफर हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में, इंटर स्टेट ट्रांसफर्स भी होती हैं. तो यहाँ पे कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन इंटरनल रिपोर्ट के थ्रू जो ऑफिसर्स के कंडक्ट उनको देख करके ट्रांसफ़र करती है, बट क्या ये ट्रांसफ़र जायज़ है? क्योंकि जो भी एक इंडिविजुअल है वो अपनी पूरी कैपेसिटी में काम करता है, इलेक्शन कमीशन के जुरिस्डिक्शन में काम करता है, तो क्या एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शंस गवर्नमेंट के साथ काम करने में उसको क्या प्रॉब्लम होती है, राइट? इलेक्शन कमीशन कैसे डिसाइड करती है उसको? एंड इवन द एक्चुअल थिंग दैट इलेक्शन कमीशन वर्क, जो ट्रांसफर पॉलिसीज उनकी काम करती है, वो भी क्लियर नहीं है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर करते हैं इस चीज़ों को या फिर आर्टिकल 324 के अंदर करते हैं, राइट? एंड इसी में ट्रांसफर द चीफ सेक्रेटरी एंड, और ये पावर है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो चाहे तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इवन द डीजीपी, द डायरेक्टर जनरल पुलिस, उसको भी ट्रांसफ़र कर सकती है. तो एक बहुत ही हाई पावर दी गई है इलेक्शन कमीशन को विथ रिगार्ड्स टू द आर्टिकल 324 एंड एमसीसी, दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव मूव्स, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके जो वहाँ पे जो ज़रूरतें हैं इंटरवेंशन करती है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे, और मिनिस्टर कैन नॉट अनाउंस एनी फाइनेंशियल ग्रांट्स. तो जहाँ भी मिनिस्टर्स को कोई भी ग्रांट, कंस्ट्रक्शन, रोड, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ देनी है, इन सारी चीज़ों से उसको पूरी तरह से बार्ड कर दिया जाता है. ही इज आफ्टर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इनटू प्लेस, नो मिनिस्टर कैन गिव द बेनिफिट्स, राइट? एंड दीज आर द कोर गाइडलाइन दैट इज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट. बट इन रियलिटी गवर्नमेंट इज अलाउड टू टेक ECI, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो अलग तरीके से भी काम करती है कई स्टेट्स में. एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे, जहाँ पे पेंडेमिक वर्सेस ECI की बात की गई है. एक एग्जांपल दी गई है केरला की, जहाँ पे रिसेंट में केरला गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले ही लोगों को एक सप्लाई किट दे रही थी, जहाँ पे दे हैव प्रोवाइडेड राइस, पल्सेस, कुकिंग ऑयल, एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड. बट after the election, the election date was announced, the election commission has asked not to dispute that, and these come under the basically model code of conduct, MCC के अंदर आती है. तो आप देख सकते हो कहीं कहीं चीज़ों पे एग्जाम्पशंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसको पहले से कर रही है. दिस इज नथिंग दे इन फेवर, बट ऐसा रोक लगाने पे कई लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है. सो दिस इज समथिंग, अ क्वेश्चन इज दैट ECI should take such decision under the model code of, कुछ स्पेशल केसेस में एग्जाम्पशंस देने की ज़रूरत है. Now way forward, this is very important. There is no doubt that election commission need to be properly effectively regulated, और ये भी डाउट नहीं है कि इसके जो कंडक्ट है उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ कंक्लूड किया जा सकता है, राइट, विथ प्योरिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज. एंड नीदर सिटीजन नॉर द ECI इज परमिटेड टू अज्यूम द आर्बिट्रेटरी पावर. और अभी ये ज़रूरत है कि जो कन्फ्यूजन अराइजेज है नेचर, पावर, एवेबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पावर को ध्यान में रखते हुए उस पर काम करने की जरूरत है. हाउएवर, नो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज वेस्टेड विथ अनगाइडेड और एब्सोल्यूट पावर, राइट? Moving to the MCQs question of the day. The first question is from the current affair, that consider the following statement about Maritime India Summit 2021. So it focuses on the area of upgradation of infrastructure. India aims to strengthen the vision of Atmanirbhar Bharat, and Denmark is the partner country with 3-day summit. So which among the following is the correct option? You have to choose that and write that in the comment section down below. So many of you are participating. Participate more and practice a lot more question before you appear in the real examination. Second question, with regards to the Swachhta Sharthi Fellowship, consider the following statement. The Government of India under its Waste to Wealth Mission launched the Swachhta Sharthi Fellowship, and the Waste to Wealth Mission is one of the 9th national mission of the Prime Minister Science, Technology, Innovation Advisory Council, right? PMSTIAC. So important questions. Just let me know how many of you know the correct answer and write your answer in the comment section. So do participate, write your answer there. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Service on YouTube. And if you like this video, if you find this video helpful, do not forget to give thumbs up and share this video to your friends and needed one.
And if any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe.